Namaskar. Uh, Friends, I'm quite sure uh, you must have been very busy throughout the day in watching various television channels to understand and to find out what happened to the elections that were held in four important states. एंड आप लोगों ने काफी चर्चा देखे होंगे, काफी एनालिसिस विश्लेषण बड़ा सो कॉल्ड एक्सपर्ट से भी आपने सुने होंगे. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज दैट लेट मी बी लिटिल dispassionate and I will try to be little different than what uh, most of you might have heard or seen throughout the day to day. And as you know, the results are very clear, though technically they still are to be out, and we still will say that these are the trends, even though it is going to be nearly 6 o'clock. But the foregone conclusion that BJP is winning three states of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Rajasthan, and Congress is winning in Telangana. So the various discussions that were held in various TV channels, and today I heard some of them. One of the points that has been made by those people who never expected BJP to do so well. In fact, as I have been telling before also, maybe in this forum also I must have made that point, that in many a case elections are fought, or the outcome, electoral outcomes depend on the perceptions, and what are the and how these perceptions are built. Perceptions are essentially built by the aggressive campaigning of the contestants or their respective parties. But more than that, the perception is created by the media. And if one goes by our national media here in Delhi, then the perception was that at the most, BJP may win only in Rajasthan. Chhattisgarh, Madhya Pradesh are foregone conclusions. They will, the Congress will retain power in Chhattisgarh and snatch, Madhya Pradesh from the hands of BJP, so that there will be justice in the sense that last time they had won, but BJP subsequently formed the government after a year or so. तो क्या होगा कि ये यही होने वाला है. At the most, they were giving some chance to BJP only in one state, and that is Rajasthan. But what has happened now, that you all know, that more than anything else, by defying all perceptions, BJP has won very handsomely in these three states, and Congress has won there. And now what these BJP critics are saying, that look, this is not good for the country. This is not the good for the country. For what? Now the country has been now divided into North India and South India. And then BJP has been completely wiped out from South India. And it is essentially a North Indian, and so and some very grudgingly say that they have got some base also in the West India, because if we take Gujarat and Maharashtra into account, and that's not good. Bilkul saaf ho gaya BJP South se. That's why I said that I'll be saying something different, but I think I feel like laughing when one hears this sort of thing.
if BJP as a nationalist party साफ हो गया, then the साउथ का जो पॉलिटिक्स है, साउथ का जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट्स है, आप देखिए पिछले 20 साल 25 साल की 30 साल से भी आप देख लीजिए, essentially their जो real states है, they have been dominated by say undivided Andhra before, and now Andhra, Telangana, and Tamil Nadu, that totally controlled by the regional parties. NTR साहब पहले थे, तेलुगु देशम there, and then ये यहाँ तो DMK and AIDM करते. तो कौन सा पार्टी वहां राज कर रहा था? As far as the Congress is concerned, it always dependent. Let's talk of Tamil Nadu. तमिलनाडु में तो कभी कांग्रेस सत्ता में नहीं रहा मेरा ख्याल में 60s के बाद. And whenever they were ruling here in Delhi, they were getting the support of either DMK or the AIDMK. The same thing also BJP did. जब BJP भी जब सरकार यहाँ रहता है, right now they may not be having anything because AIDMK has gone out of this NDA. But the point is that most of the time, the ruling party here in Delhi dependent on the support of a regional party in Tamil Nadu and the support of a regional party from Andhra Pradesh. And after the division of Andhra Pradesh, Telugu, what is BRS, TRS, now they made it Bharatiya Rashtra or something. जो BRS वो रहा power में तेलंगाना में, and वहाँ हमेशा वो रहे between Telugu Desam and this Rajsekhar Reddy जी का पार्टी का जो नाम है, I just am not remembering it. So the point is, अगर BJP as a national party नहीं है तो ये, and then Congress, this same thing. So why you bring out this South India, North India, and the very fact that let's not talk to Karnataka. Karnataka is very importantly speaking is South Indian state. I'm not talking of Pondicherry. Pondicherry, I think right now has got a government in which BJP is a partner. Anyway, but I'm talking of Karnataka. Karnataka में बीजेपी काफी बार सरकार में रहा है. कर्नाटक में कांग्रेस जैसे कभी आता है जाता है, इलेक्ट्रली जीतते हारते हैं. कर्नाटक में so many times BJP has also formed government. Right at the moment it is not there, but you can't say that it doesn't exist there. Right? They are the number one opposition in the party. And then Kerala, in any case, you are not there. The communist parties are there. So what is this big point when one is not dispassionately analyzing the country's politics by saying that, look, it is a very dangerous phenomenon. BJP, the ruling party here at the center, doesn't have presence in the south. I think this is a huge myth, because you are not presenting the cases properly. So that is, and then secondly, अभी भी जो कांग्रेस का जो जीत हुआ वहां तेलंगाना में, that also, of course, when we get the facts, figures, ज़्यादा आएगा, statistics, data, we'll be able to know it much better in 2-3 days time. But ये भी एक impression होता है भाई, 10 साल वो सरकार था, the anti-incumbency वाला जो है, people wanted a change, and it is not necessarily people have not voted for the Congress party in Telangana. They have voted against the BRS, which has been accused of corruption, arrogance, what and what not. The point is this: this is what is happening, that whenever state assembly elections are being held, usually that was the case before. Now that trend has been curtailed to certain extent, in the sense that this anti-incumbency as a factor plays an important role in assembly elections. Invariably earlier क्या होता था कि incumbent government हार जाता था, and the next the important जो opposition party वो आते हैं. जैसे राजस्थान में हमेशा रहा है. There is a theory called this theory of pendulum. Pendulum means one election to this party, the next election to the other party.
That means, incumbent in a government, it is very difficult. It has been seen to be repeatedly getting, people's, mandate. So that way, if you look at it, I do not, give, much importance that, in that sense, to this, BJP winning in Rajasthan, because as I said that it was, I talked of perception. The perception was that बीजेपी वुड बी विनिंग, ऑफ कोर्स दिस मार्जिन इज इंपॉर्टेंट. आपका उनका कोई 114-15 हुआ है तो ये यूजुअल होता है 104 105, एंड द वोट परसेंटेज जो होता है वो 1-2% होता है, फर्क. एंड दिस टाइम आल्सो द सेम थिंग हैज बीन मेंटेन्ड. But the credit that way, if you look at it, this phenomenon of incumbent in a government finding it difficult to retain power unless they do really very well, has been proved here in case of Telangana, and has been proved in Chhattisgarh. The fact that Congress was having the government there, अगर आप इतना सक्षम हो, जैसे राजस्थान में भी थे, इतना सक्षम हो, इतना बढ़िया काम किए हो, एंड बीजेपी से गंदा कोई पार्टी नहीं है भाई, देन आपका सरकार को क्यों लोगों ने वोट आउट किए? सो मैं जो बोल रहा हूं कि अभी ये जो ट्रेंड था, ये that incumbent government invariably loses power in the next succeeding election. आजकल कब होता है, and then you have to give some credit here to some regional parties in certain states who somehow there have been managed, like in Odisha, Navin Patnaik must be given tremendous credit, because despite the fact that he has been in power for such a long time, he is winning. One also can give some credit to Mamata Banerjee in Bengal, because election after election, she continues to win. I think she has been there now in power since 2010-11. मेरा ख्याल में 15 साल 3 इलेक्शन तो जीत ही ली है. तो that way if you look at it, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसका अगर अच्छा है at the moment, that एक बार पावर में आते हैं एंड वो इनकम्बेंसी गवर्नमेंट एंटी इनकम्बेंसी ट्रेंड को ओवरकम करके पावर रखता है, देन एज ए नेशनल पार्टी, देन बीजेपी इज मैचलेस. बीजेपी आप देखिए कितने साल से गुजरात में इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जीत रहा है. बीजेपी ने क्रिएटेड हिस्ट्री लास्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश, जब योगी आदित्यनाथ ने रखे हैं अपने, they could save his government and got another fresh mandate for 5 years. They won again in Uttarakhand, and now they have won, perhaps they have created this electoral record and history, this margin of their victory in Madhya Pradesh. So if you look at it that way, then I think this Congress victory in Telangana should not be so over glorified, and to say that BJP is completely wiped out from south, that factor also should not be given that much of importance. On the other hand, if I may say so, that I think this will be my second point. जब मैं अभी बोलता हूँ, वो second point अभी ये होगा कि ये अगर इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, मेरा पॉइंट नंबर 1 आज आप लोगों के लिए मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ एक है, तो सेकंड पॉइंट होगा कि व्हाट आर इट्स implications for the 2024 elections. Friends, I am of this opinion that if I go by the past, then one also very dispassionately, if you look at it, these outcomes in the assemblies do not necessarily have an impact on your national elections. And if they have an impact, then actually again it is in favor of BJP. It is going to be not the other way around. मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, लास्ट टाइम जो 2018 में ये सब इलेक्शंस हुआ था, अब जानते हैं जो 3 स्टेट्स में बीजेपी हार गया था. भाई बीजेपी गवर्नमेंट्स वेयर देयर इन दीस 3 स्टेट्स,
एंड इन ऑल दीज 3 स्टेट्स में छत्तीसगढ़ में हारे, मध्य प्रदेश में हारे, बिकॉज वो पहले दो मार्जिन ऑफ डिफरेंस वाज लेस, बट देन कमलनाथ जी सरकार बनाए थे, एंड राजस्थान में गहलोत साहब बनाए थे. And the same thing had happened in Karnataka too, because कर्नाटक में भी लास्ट 2018 में जो इलेक्शन हुआ था वो कांग्रेस का सरकार था. बट अब देखिए, जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस न हुआ, फ्रॉम ऑल दीज स्टेट्स बीजेपी लिटरली स्वेप्ट. आई मीन 4-5 महीने का जो गैप के बाद जब नेशनल इलेक्शंस हुआ, आई थिंक राजस्थान से 25 to 25 सीट ले लिए, मध्य प्रदेश से मेरा ख्याल में 1 सीट को छोड़ के वो भी पूरा ये कर लिए, छत्तीसगढ़ इवन कंप्लीटली स्वेप्ट, एंड कर्नाटक में आई थिंक आउट ऑफ 25 दे टुक 24, और आउट ऑफ 26 दे टुक 25. सो द पॉइंट इज, अगर वन वुड हैव गॉन by this theory that ये जो इसको जो बोलते हैं सेमीफाइनल फाइनल, आई थिंक दिस इज अ वेरी रबिश एनालिसिस. मैंने बोलता ना कि आई वांटेड टू बी लिटिल बिट डिफरेंट. आपने आज सुने होंगे सेमीफाइनल में बीजेपी का जबरदस्त जीत हो गया. ये कोई सेमीफाइनल नहीं होता है, बट मेरा ख्याल में कोई असेंबली इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन के बीच ये इलेक्शन फर्क होता है. अगर वो होता तो बीजेपी को इतना सीट नहीं मिलता 2019 में, आफ्टर लूजिंग ऑल इलेक्शंस इन ऑल दीज स्टेट्स. But does that mean, now that is the point, does that mean कि ये अभी जो इलेक्शन होगा, the Congress will make such a big comeback so that they will be sweeping the Lok Sabha polls or doing extraordinarily well. It is a very ticklish question, ticklish point in the sense, आप देखोगे क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, एंड व्हाट वाज द केस देयर, बिकॉज एवरी इलेक्टोरल एनालिस्ट और इलेक्शन जो एक्सपर्ट जो होते हैं वो सब एग्री करते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मोदी कैरिस्मा एंड मोदी फेनोमेना. जब नेशनल इलेक्शंस होगा, जैसे 2019 में हुआ था कि अभी जो 2024 में होगा, तो अब एक मोदी फैक्टर आएगा. वो जो मोदी फैक्टर आएगा वो कम से कम 4-5% आपका वोटिंग डिफरेंस हो जाएगा फ्रॉम योर स्टेट लेवल इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस एंड द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. अगर वो कम से कम 4-5% जब आप वोटिंग का बात करते हैं, इट इज a huge thing, it changes the calculations or the eventual victories or for that matter defeats quite considerably. उसका 5% अगर होता है. नाउ द पॉइंट इज, लास्ट टाइम सब हारा था जो बीजेपी जो इलेक्शंस, ये जो 3 स्टेट्स में आप देखिए, इनका डिफरेंस ऑफ वोट्स हमेशा 2% होता है, यूजुअली 2%, एट द मोस्ट 2.5%, 3% जाता है. इस बार भी हुआ है द सेम थिंग. आप देखेंगे, अगर मतलब जैसे मैंने बोला कि ये पूरा डिटेल एनालिसिस बाद में हम देख सकते हैं, बट देन ब्रॉडली स्पीकिंग, आप इलेक्शन कमीशन का साइट में अभी आप लोगों के बात करने से पहले देखा था, वो यूजुअली 2% भी है, छत्तीसगढ़ में है, तो ये राजस्थान में भी 2%, 3%, यही फर्क पड़ा है बीजेपी परसेंटेज, एंड दिस थिंग दैट इज अंडरस्टैंडेबल. Though this is not understandable, the huge difference of nearly 10%. That's why I said it is in history, it is in a electoral, जिसको बोलते हैं कि they have, created an electoral history. The BJP as a ruling party in Madhya Pradesh, despite being the ruling party, despite being the incumbent in a government, तो उनका जो अभी जो मार्जिन जो है कांग्रेस से, वो लगभग 10%, इतना ह्यूज कभी हुआ ही नहीं है. सो अगर इफ दैट इज द केस, एंड देन मैं जोड़ दूंगा कि मोदी फैक्टर का अनदर 4-5% है, इफ यू ऐड दिस थिंग्स, then by logically speaking, Modi is going to sweep all these states. But the point is, how much in the ultimate analysis BJP is going to gain. The whole point is, last time also BJP had swept. 2019 में मोदी जी ने ये इलेक्शन सब स्वीप कर लिए थे. मैंने जैसे बोला कि ये जितने ये 3 स्टेट्स है, कि इवन इफ यू ऐड कर्नाटक, अगर ये कर दे ये 4 स्टेट्स में
98% वो सीट्स नो जीत लिए थे, 98 और 99% सीट जीत लिए थे। वो अगर आप से 45% में, सपोज ये लास्ट टाइम इन्होंने हारे थे, कांग्रेस का 2% ज्यादा था, तो इनका अगर 40 था, इनका 42 हो गया, एंड देन मोदी का 5 फैक्टर आ गया, मोदी का 45 हो गया, इनका 42 रहा, तो मोदी ने लास्ट टाइम जीत लिए थे। तो अगर भाई वो जितने भी जीते, इतना अगर 44% में आपने 99% सीट जीत लिए थे, अभी आपका अगर 50% भी हो जाए बढ़ के, मोदी फैक्टर मिला के अगर अभी 47 48 में, सीट्स तो इतना ही आएगा, सीट्स तो ज्यादा नहीं जाएगा ना, सीट्स तो इतना ही है। तो दी होल पॉइंट इज, कोई रिमार्केबल बीजेपी का पार्लियामेंट्री टैली में कोई सीट बढ़ने वाला नहीं है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी रीच्ड द मैक्सिमम। इवन इफ अगेन मोदी फैक्टर को आप जोड़ोगे स्टेट्स में, तो वो वही जाएगा ना, उससे तो ज्यादा पॉइंट जा नहीं पाएगा ना। आपने ऑलरेडी 99% लास्ट टाइम रखे थे, इस बार कितना रखोगे? 110% रखने में तो रिजल्ट तो सेम है ना। सो हाँ, ऑन द अदर हैंड, maybe there is a chance, that's why I was saying, in तेलंगाना कांग्रेस ने जीता है, मैंने बोला कि एंटी इनकम्बेंसी ऑफ टीआरएस गवर्नमेंट, वो इतना दे शुड नॉट ओवर ग्लोरीफाई इट, बट देन व्हेन इट कम्स टू द बीजेपी, लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था वहां बीजेपी को 7% सीट मिला था, 7%, एंड उनका एक एमएलए जीत पाया था मेरा ख्याल में, 2018 में एक एमएलए जीता था। इस बार मेरा ख्याल में कोई दिखा रहा है 8, कोई दिखा रहा है 9, दैट मीन उनका ये बड़ा है, दैट मीन दे आर गोइंग टू गेट मोर एमएलए दिस टाइम, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट लास्ट टाइम इनको वहां 7% वोट मिला था, दिस टाइम बीजेपी को लगभग 15% वोट मिला है वहां, कहां? तेलंगाना में। अगर 7% वोट में, अगेन इफ यू ऐड दैट द मोदी फैक्टर देयर, इन्होंने मेरा ख्याल में 3 एमपीज लास्ट टाइम जीते थे तेलंगाना में। सो अगर तेलंगाना में 3 एमपी जीते हैं विथ 7% वोट्स, इफ आई रियली कैलकुलेटेड दैट वे, देन इस बार अगर तेलंगाना में अगर इन लोगों को 15% वोट मिला है, तो ऑब्वियसली देयर इज ए क्लियर कट अपॉर्चुनिटी और चांस ऑफ द बीजेपी टू इंप्रूव इट्स लोकसभा टैली फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना। That means that is a southern state. So let's not glorify this Congress victory in Telangana so much, though one should give the credit, at least they have got it, that's a different thing. But then to say that BJP is out, I think one of the great electoral pandits, I am not going to name him, वो हमारा कभी भी साथी थे, हमारे साथ अध्ययन भी कर रहे थे विश्वविद्यालय में, ही इज नाउ बिग इलेक्टोरल पंडित। वो मैंने उनको सुना कि साफ हो गए, मैंने बोला ये तो हास्यास्पद बात है यार। तो ये हो गया आपका, ये मेरा सेकंड पॉइंट था कि इसका पार्लियामेंट देन मेरा को और 2 पॉइंट्स में आप लोगों के साथ में चर्चा मैं रखूंगा मेरा विचार। थर्ड पॉइंट ये है कि एक बात प्रूव हो गया, व्हाट आर द रियल मुद्दास। इसमें जो कास्ट के नाम पर जो इलेक्टोरल कैंपेन हुआ था इस बार, पर्टिकुलरली दी कांग्रेस पार्टी ने किए थे, जो आप जानते हैं आजकल ये नया शुरू हो गया है स्लोगन, कास्ट सेंसस। तो क्योंकि ये बोलते हैं कास्ट करके वो करेंगे लोग, आई थिंक ये इतना फटा हुआ रिकॉर्ड है, जो मैंने लिखा है इसके पर काफी बार, जब यूपी इलेक्शन तो बने, अगर ये कास्ट के पर आजकल तुम अगर बोलोगे कि इंडियन लोगों ने तुम्हारा बात सुन के उस बेसिस पर लोग वोट देंगे, तुमसे ज्यादा कोई मूर्ख नहीं होगा। मेरा पॉइंट है, एक तो उनका लॉजिक इज नॉट एब्सोल्युटली स्कैंडलस, यू थिंक दैट बहुत गलत बात है, कास्ट हटना चाहिए, कास्टिज्म दूर होना चाहिए इंडिया से, बट तुम क्या करते हो, कास्टिज्म को लेजिटिमाइज करके उसको परमानेंट करना चाहते हो। कास्टिज्म, कास्ट सेंसस, उनके बेसिस पर जितना कोई कुछ काम नहीं करो, तुम्हारा नंबर बढ़ाओ पैदा करके, एंड उसी के बेसिस ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रेंथ। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स।
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में जो गरीब हैं, जिनका भाई नॉट प्रिविलेज्ड क्लासेस है, उनको सरकार और द सोसाइटी शुड प्रोवाइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्प सो दैट दे कम अप। बट इसके बाद तुम बोलोगे कि आउटकम होगा ये प्रोवाइड करने के बाद, तुम फेल हो जाओगे, तुम 20% रखोगे, सपोज देर आर सर्टेन देन आप उसको नौकरी भी दो, 20% रखेगा उसको नौकरी भी दे दो, ये अच्छा नौकरी उसको टॉप डॉक्टर्स बना दो, उसको टॉप प्रोफेसर्स बना दो, एंड नॉट ओनली दैट, एंड देन ये बोलते हैं कि अगर नौकरी भी करोगे, वो नौकरी के बाद इनको प्रमोशन भी दे दो कास्ट के बेसिस पर। इज दिस द वे टू इराडिकेट कास्टिज्म फ्रॉम इंडिया? If this is the thing, then so India doesn't have great future. Let me tell you very bluntly. The point is, I think what is happening, the more and more Indians, particularly the youngsters, they are realizing it. ये जो नौटंकी करते हैं, particularly हमारा जो नॉर्थ इंडिया का कुछ पॉलिटिशियन, जो एंड बेसिकली ये सब फैमिली रूल वाला करते, जैसे आपका ये कहां से आता है, आपका बिहार से एंड यूपी वालों से सबसे ज्यादा ये डिमांड आता था, ये बाकी ऑल इंडिया में इतना नहीं था ये वाला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस का जो सर्वे सर्वा है, द रियल मालिक, ये तो खारगे साहब तो इज लाइक जस्ट ए थप्पा, बट द रियल जो मालिक है उनका, वो आजकल पूरा इंटायर कैंपेन शुरू कर दिए। मैं आऊंगा 2 घंटे के बाद कास्ट सेंसस कर दूंगा, जितना आबादी उतना क्या हक। यार ये जो डेंजरस जो खेल खेल रहे थे, एंड मैंने जब बोला कि ऑल टोल्ड वेरियस कम्युनिटीज, आपने जो मैंने बोला इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ दिस आउटकम्स, ये बढ़ाना चाहिए भाई। आप अपॉर्चुनिटीज दो बाय ऑल मींस, बट देन व्हेन यू से दैट दिस इज दिस थिंग, दिस वेरी डेंजरस थिंग, एंड देन इंडियंस ने कितना इलेक्शंस हुआ है, दैट व्हेन आई सेड दैट आई हैव रिटन ओवर द लास्ट 5-10 years many a time on this, कि दिस इज द इजीएस्ट एक फॉर्मूला है। जैसे आपने पढ़े होंगे स्कूल में a+b² इज a² + b² + 2ab। तो द पॉइंट इज हियर, और कास्ट है, यूपी में इतना कास्ट है, उतना तो परसेंटेज वोट मिल जाएगा, अरे वो जीत जाएगा, एंड वो है वो जीत जाएगा। अगर भाई ये होता तो भाई ये मुलायम सिंह यादव एंड अखिलेश यादव तो कभी हटते नहीं पावर में, भाई लालू यादव तो कभी जिंदगी में हटता नहीं है, नहीं हटता भाई, उनका रहता है सो कॉल्ड दिस ओबीसी पॉलिटिक्स आप जो कर रहे हो। तो अभी क्या हुआ, जस्ट बिकॉज उसने एक करके, आई कैन अंडरस्टैंड भाई दीज पार्टीज डूइंग इट, बट फॉर ए नेशनलिस्ट पार्टी लाइक कांग्रेस, आई हैव रिटन इट, उनका इवन नेहरू जी openly had defied it, Indira ji had defied it, Mr. Rajiv Gandhi had defied it, but abhi unka supuत्र, or I do not want to use any other adjective, वो बोल रहे हैं कि अभी वो यादव जी की नीतीश कुमार जी का गुलामी जैसे करके आपने बोल रहे हो कि कास्ट कास्ट कास्ट। तो ये जो इलेक्शन में ये प्रूव हो गया, ये जो मेरा जो थ्योरी था कि आप इंडियंस को डिवाइड नहीं कर पाओगे अभी इन फ्यूचर, कि अभी नहीं कर पाओगे, बिकॉज नहीं कर पा रहे हो भी ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। यू कैन डिवाइड द कंट्री अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ दिस कास्ट। अरे भाई देश को कैसे जोड़ेंगे इस पर सोचो, कास्ट को कैसे रिमूव करके इसके पर ना बात करो। तुम इसको और न फर्दर डिवाइड करते हो। तो इसीलिए मेरा ख्याल में लोगों ने जो आंसर दिए हैं, दी ग्रेट यंग लीडर, बिकॉज वो तो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, इटर्नल यंग लीडर, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अरे भाई कम से कम देखो यार, आप तो खुद तो डूबे हो, इतना बड़ा पार्टी, इतना बड़ा ग्रेट नेशनल पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस को रखो यार, कांग्रेस को उद्धार करो। कंट्री नीड्स ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी। बट देन आपका जो नेतृत्व में, आपको तो उसको ज्यादा से ज्यादा दिन से पर ज्यादा और धराशायी कर देते हो भाई, वो तो ऊपर क्या उठेगा, हर इलेक्शन में आप नीचे 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 गिराते हो। एंड माय लास्ट पॉइंट इज दिस, एंड
ये मैं बोल के फिर बाकी कभी ओकेजन आएगा हम चर्चा करेंगे। एंड दिस इज ए वेरी डेंजरस थिंग फॉर our not only countries overall in the image but also the overall in the economy. And ये जो गलती जो हो रहा है ये सिर्फ ये अपोजिशन पार्टीज नहीं कर रहे हैं, ये भी मैं बोलूंगा ये हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रहे हैं। ये जो फ्रीबी कल्चर ये जो शुरू हो गए हो भाई, सब कुछ न बांटो भाई, देयर इज समथिंग कॉल्ड सोशल वेलफेयर। रोड बनाओ, एवरीबॉडी विल बी बेनिफिटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, एवरीथिंग प्रोवाइड जॉब्स, एवरीबॉडी विल बी बेनिफिटिंग। बट इनको ये पैसा बांटो, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, उनको भाई फूड ग्रेन्स ये उनको एमआर, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट देन यू हैव टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन what is the limit of these welfare measures and what is the between welfare measures and these freebies that you are promising. तुमको ये सब मैं मुफ्त में कर दूंगा, गाड़ी मुफ्त, ये मुफ्त, सब लोगों को हम हम दे देंगे क्या 12,000 15,000 रुपया, फ्री लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे। Again, Tamil Nadu culture, ये only state, I think if memory serves me right, it was being done by the Tamil Nadu government, but now it is becoming a national model. It's very very dangerous. आप भाई देखो जो अर्थ भाई तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे जब आपके पास में धन होता है ना, ये धन तो पेड़ में पैदा नहीं होता है भाई। देयर आर 3 ways you can generate wealth through 3 ways, particularly when the government when I am talking of सरकार का बात, क्या करोगे, इधर नोट छपाओगे, तो ये नोट छपाओगे जब उसका इक्विवेलेंट वाला तुम्हारा पास ये नहीं है, मैचिंग थे, तो एक दिन आ जाएगा ये नोट छपा के तुम्हारा एक कप चाय को भी आपको 15,000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन सम अफ्रीकन कंट्रीज में है, देयर इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ सो दैट यू विल डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा बात क्या होगी, तुम्हारे पास नहीं है, तुम क्या करोगे, तुम्हारा कुछ रिसोर्सेस को जो बेचोगे, आजकल जो हो रहा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ दिस नेशनल रिसोर्सेस जो है, आई एम नॉट सेइंग दैट गवर्नमेंट हैज गॉट एनीथिंग टू डू विद द बिजनेस, नो गवर्नमेंट एनीवेयर शुड डू बिजनेस, दैट इज नॉट द जॉब ऑफ ए गवर्नमेंट, बट देन आपका जो रिसोर्सेस जो है आप उसको बेचते हो, आज ये बेचो भाई, उसका भी एक लिमिट होता है ना। एंड थर्ड थिंग तुम क्या करोगे, नहीं तो तुम उधार करोगे, लोन करोगे, जैसे यही तो 3 वे तरीका पैसा कमाने का, सो दैट यू विल बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट। बट द पॉइंट इज, और फोर्थ है तुम लोगों से कलेक्ट करोगे, टैक्सेस करोगे, लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे ऑफ generating national wealth, and if you create that sort of wealth, then please distribute by all means. But then तुम अभी क्या कर रहे हो, ये जो कर्नाटक गवर्नमेंट में इतना इतना प्रॉमिस कर दिया, 6 महीने में बोल रहे हैं नहीं है। अभी केरला गवर्नमेंट गया सुप्रीम कोर्ट ने बोला वी आर ब्रोक। सो द होल पॉइंट इज दैट डज, आपने देखा होगा श्रीलंका का हालत क्या था, अभी पाकिस्तान का हालत क्या है, अभी 70% ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज का हालत क्या है। तुम इंडिया को ऊपर बढ़ाओगे ना, you will be making a Sri Lanka out of India or a Pakistan out of India. ये फ्रीबी कल्चर सबसे बड़ा आत्मघाती काम अभी चल रहा है। ये जो इलेक्शन जैसे आम आदमी पार्टी ने, भाई लोग बोलते हैं इसको छोड़ दो भाई, केजरीवाल साहब जीतेंगे, आई डाउट वेरी मच। ये कर्नाटक में इलेक्शन जीते ओनली यही फ्रीबी कल्चर करके, एंड दे वर, दैट्स व्हाई आई सैल्यूट द पीपल ऑफ राजस्थान। But then I think that also is not proper, because as I said that बीजेपी में भी कोई कम फ्री प्रॉमिस नहीं किया है, मध्य प्रदेश में भी कोई नहीं किया है, ये सब पार्टीज करते हैं। बट देन हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये निवेदन है, सर इसको आप रोकिए, इलेक्शन जितना हारना इज नॉट इम्पोर्टेंट, देश बचाना, देश का भविष्य देखना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये फ्रीबी कल्चर करके इलेक्शंस न मत जीतिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।